Good afternoon, everyone. Welcome to the new session. Okay, last day of the month. See how quickly the month of January has passed. So 1 month down, 11 months to go in 2024. Okay, yeah. Good afternoon, Avni. As usual, she's the first one to wish. Priyanka, Sania. So good afternoon. Yes, Sania, I'm good. I hope you all are also good. Okay. So last time we have talked about differentiation. Now we'll talk about it's the integration. Okay. So as you know, they are like peas in a pod, differentiation and integration. So let us begin. Yes, Nancy, good afternoon. Soumya, Dheeraj, a very good afternoon to all of you. Somebody was asking about the marks. So this is the out of the 40 marks, these four chapters constitute around 30 to 50%. So differentiation and integration, if we take 1/4 of those marks, so around 3 to 4 questions we should be able to expect. And as already told that it is excluding the trigonometric application. Okay, so now you don't have to worry about trigonometry. So even if by mistake you find certain sum where some of the concept may be applied, so don't worry. No, when you are looking into other books, so you just have to stick to what is given in a study material. And I would really request because that you do not put differentiation and integration in option, because sometimes they will give you a question which is directly from the formula, like directly find the integration of x raised to 6. I mean, you just need 10 to 15 seconds to solve it. And just because you have put it in the option, you're losing out on your marks. Okay. So, like, I know it's very scary. I can completely understand. But still, if you think that I can help you out, you should try to attempt those questions as far as possible. Complete the study material first 1 or 2 times and then go to other books, because other books may be more based on the deep mathematics, and so you may go into some problems. Why? Because the question is lengthy, and those questions are usually for the long, where we give a written exam, so that type. So for MCQ purposes this should be sufficient. Okay, so that and as I always tell, do not worry about the weightage. First you understand the topic and we can worry about the weightage later on. Okay, Anuj, good afternoon. Then Sakshi, Mohammad, Kritika, Sunny, Aman, Dhanush. Yes, I'm good, Dhanush. Saman, Fatima. Okay, then Hitesh, Renuka. Thank you for the emoji, Renuka. Mohit, it's your first lecture. Yes, this is Mohit. This is a little continuation from the differentiation, but but you can always watch it on YouTube. Okay, you can just put it go in for ICAI YouTube, and there you can see those previous lectures also. Okay, Preeti, I will see. Okay. Mohit, you're not visible. Nobody is visible. You're only available on the chat for me. Okay. Vanya, good afternoon. Divya, Sania, Sunil, then Neha, and yeah. Okay. Uh, yes. Preeti, just put it in the chat box, whatever you want. Okay. Yeah. So let us begin now, because integration is also a big chapter. And for that, I'm going to first quickly revise the differentiation uh, formula, which will help you in the integration also. Okay. जहां तक होगा, जहां पे पॉसिबल है वहां पे हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन कुछ कुछ कैलकुलस की ऐसी बातें होती है ना, जहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, तो उसको उसको तो कुछ और शब्द नहीं है,
तो वो वैसा का वैसा यूज होगा, ठीक है। तो जिनको भी हिंदी में चाहिए, तो जहाँ पे भी आपको अगर किसी इंग्लिश शब्द का मतलब ना समझता हो या उसके बारे में कुछ और चाहिए आपको जानकारी, तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? ओके, इंटीग्रेशन is a fundamental concept. Okay. Just a minute. Integration is a fundamental concept in calculus. Like differentiation, fundamental मूलभूत जो होता है वैसा है, that involves finding the accumulation of quantities, often interpreted as finding the area under the curve. So whenever you see the word integration, you should think of accumulation. Accumulation माने जमा करना. Okay. So accumulation is the important word. Like as if you're trying to find the area under the curve. Okay, so when you're talking of integration, let us try to recollect what we talked about this differentiation. This is also a fundamental concept in calculus that deals with rate of change. Okay, so there we are talking about rate of change. Here we are talking of accumulation. Okay, so can you understand that there is a difference? So there is no need to get confused when I'm trying to integrate. No? Integration, like we have talked, we know about that in civics also. We talked about that in real life also. Integration. India is integration of so many religions, so many cultures. So that is what is integration. So here we are trying to accumulate things. Okay. Now, and what about differentiation? It refers to the rate of change. And what does differentiation do is when my input is changing, how much is my output changing? Now, let us take an example. Integration is applied in finance for calculating compound interest and understanding the growth of savings or investments over time. Okay. So if I have investments where the rate of interest is changing, so what I do is over the period, whatever interest I have received, I integrate, and from there, I'm able to get the rate of interest for that particular investment. If you save money regularly, okay, so you get your pocket money and then you save it. गुल्लक में डालने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप जाके कहीं पे आरडी खोल देते हैं बैंक में या छोटी जो बचत योजना होते हैं उसमें आप डालते हैं, okay, and the interest rate is changing, the integral of your saving rate over time will give you your accumulated saving. This is important for understanding of your overall financial growth. Okay, so you put something right now. Okay, so suppose today is my birthday, so many of our relatives is giving me cash, so I take that cash, I put it in the bank, and then like every year I do that. So after 10 years maybe I want to get something for myself, and then I say, okay, let me look at what how much money I've accumulated, and then when I try to see it, then I come to know. Okay, so that type we are trying to understand. And also like the practical application in biology, we are talking about population growth, integration of the function over time to give you the total population that is grown, like for a city, how the city has grown, and what like even when we want to forecast, okay, so what will be the population in 5 years time. Okay. Hello, Neha. Yes. Devansh. Someone welcome, no problem. Yes, Anush, bank deposit is a very good example. मोहम्मद, अभी शुरू हुए 10 मिनट हुए, 10 मिनट में कैसे समझेगा? आप जैसे जैसे करोगे तो समझेगा ना, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपको. यस सानिया, accumulation means जमा करना. Okay, so
Now, the other practical example is, I think this will make it clear to the people who have not understood is, if pollution level in the city varies throughout the day, okay, in the morning it will be very much when people are going to the office, then in between during the daytime it will be a little less as everybody is in the office and very few people are going out. And then in the evening again it is, there is a large pollution because so many cars and two-wheelers autos are on the road. Okay. Then what we do is we integrate the pollution rate function over time and gives us the pollution exposure. Okay. Then we like every time in the news you see na that Delhi is the most polluted in India, and Bangalore is now also catching up. It's also a polluted city. So all those we find out using integration. So integration is employed in environmental science to assess and mitigate the impact of pollution over extended periods. Okay, so once we know this, then we try to find out what is the impact of this pollution on the health, what is the impact of this on the consumption of petrol, diesel. Okay, all those things are going to help where integration is a basic concept. Okay, integration is a reverse process of differentiation. So you have integration, fx, and differentiation. Now we'll quickly revise the formula for differentiation and then we can go to this. Exposure means what? Like because of pollution, what happens to our health? Like if in the evening, if you're traveling on a road in Delhi without a mask on a two-wheeler, what is the exposure that you have? That all the bad gases are going to go into your lungs. Okay, so that is exposure. लाइक कभी बोलते हैं ना बुखार कैसे आ गया, अरे एक्सपोजर हो गया क्योंकि बिना स्वेटर के बिना मफलर के चले गए ठंड में, तो उसको एक्सपोजर बोलते हैं. ठीक है. नित्यश्री, गुड आफ्टरनून. Yes, Anuj, integration is a reverse of differentiation. So let us quickly revise the formula. D by dx of x raised to n, okay, is nothing but n x raised to n minus 1. Okay. Then d by dx of a constant is equal to 0. D by dx of e raised to x, that is an exponential function, is always the function itself. Then d by dx of e raised to ax is equal to e raised to ax. That is, for example, d by dx of e raised to 3x will be equal to 3 e raised to ax. So this a means this number. Okay. Then d by dx of a raised to x is equal to a raised to x log a to the base e. And d by dx of log x is equal to 1 upon x. Okay. So this is what we did in differentiation. Now the opposite of that will be in integration. So in differentiation, what did we do for x raised to n? Here n minus 1. Okay. So yes. So now integration of x raised to n dx is equal to x raised to, okay, n plus 1 upon n plus 1 plus c. Okay. Now, where n is not equal to minus 1. Okay. Other than that, we have this x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1. What is integration of dx? When I say integration of dx, it means it is integration of 1 dx, which is equal to x plus c. These are all formula that you have to learn. Okay. As I always tell,
आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक बनानी है जिसमें मैथ्स के सारे फॉर्मूले आपको चैप्टर वाइज आप लिख लीजिएगा। हर रोज सुबह उठने के बाद एक बार पढ़ लीजिएगा, सोते समय एक बार लिख लीजिएगा। जब भी आपका ज्यादा मूड नहीं है पढ़ाई का तो भी आप वहां बैठ के ना फॉर्मूले, आप चाहिए तो आप जो छोटा वाला बोर्ड मिलता है उस पे कर लीजिए, रफ पेपर है उस पे कर लीजिए, है ना। या आपके मोबाइल में भी आप टाइप कर सकते हैं, आप उस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। तो ये करने से क्या हो जाएगा, आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। जितने आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना आपको इंटरेस्ट भी आएगा और उतना जल्दी भी होगा। जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आपको लगेगा यस ये चैप्टर तो करने जैसा है, इसमें मार्क्स मैं छोड़ूंगी नहीं। तो इसीलिए फिर आपको ये फॉर्मूले, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अगर पूछ लिया उन्होंने, उसको क्या लिखना है, एक्स प्लस सी लिखना है। तो उसमें ज्यादा मतलब उसमें कुछ बहुत बड़ा करने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड क्या है कि आपने फॉर्मूले अच्छे से किए हैं। So you need to have your formula ready in your notebook. Then integration of e raised to x dx is equal to e raised to x plus c. Appreciate this that d by dx of e raised to x is also e raised to x. Derivation and integration of the exponential raised to x will not change. It is going to be the same function. Okay. Yes, Anuj, very good. Where will it be 5? Oh, yes. Here it will be 3x. Thank you, Mohammed. Okay, so this will be 3 raised to 5. Then, what will be the formula for integration e raised to ax dx? It will be e raised to ax as it is upon a plus c. Integral of dx upon x, which is equal to integral of 1 upon x dx, is always equal to log x plus c. Okay. Then integral of a raised to x dx will be equal to a raised to x upon log a to the base e plus c. Okay. So we go in for the sums. So these are the sums. Those are from the examples in the book. So what I have done here is for every sum, I have written the formula. Same thing for differentiation, same thing for integration. So that one, when you are practicing, so that is what I want you to do when you are practicing sums and integration and differentiation at home also. आप कभी भी क्वेश्चन लिखेंगे, आप कभी भी डायरेक्ट आंसर लिखना मत शुरू कीजिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो जो स्पीड वाली बात है ना, वो बाद में कर लेंगे। पहले हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन भी लिखेंगे और उसके बगल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो भी लिखेंगे। उससे क्या हो जाता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ऑडियो विजुअल जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा होता है। आई एम रिपीटिंग दैट like I did in differentiation, in integration also, I have written the question and I have written the formula that I'm going to apply. What I'm trying to tell you is that the question about speed, yes, that definitely is something that you have to look into, but you can do that a little later. Right now, first, you should be able to understand the concept very well. So what you should do is you should copy the question first. Okay, you won't be doing that later on. Okay, just when you're trying to study and get hold of the subject, that time you're going to copy the question and just next to that you're going to write the formula like I've done. ये वाला question, ये वाला formula apply करना. So that is there in your memory now. You have the audio visual effect in your memory. So whenever you see the sum, आपको मैम की आवाज आनी चाहिए, अरे अरे कौन सा formula लिखना है. Okay, once you do that, it becomes easier. तो आपको दिमाग में धीरे धीरे ना दिमाग में आ जाएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन ना शायद ये हर बार होगा क्या, नहीं, 90% हो जाएगा। कभी कभी कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना है, थोड़ा सा
मे बी सॉल्विंग बाय पार्ट्स है या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, लेकिन कंसेप्ट जो है, जो बेसिक क्वेश्चंस है, वो इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे. ठीक है. यस. ओके मोहम्मद. No, no, Mohammed, it will not be x raised to 3. It is 3x, so it will remain 3x. Okay? X raised to 3 and 3x are different. Okay? ये एक जैसे नहीं है, दो अलग चीजें हैं. ठीक है. Okay, very good, Vanya, Anuj, Kritika. Okay. So what I'm going to do is, here I'm going to use the concept that we learned in indices, that square root of x can be written as x raised to half, cube root of x can be written as x raised to 1/3. और कहीं पे अगर आपको ऐसा आ जाए square root of x raised to 7, then this will be equal to x raised to 7 upon 2. Okay. So this is how it is going to be. Okay. So now we have integration of square root of x dx, which is equal to integration of x raised to 1/2 dx. Now integration of 1/2. What is my n? N here is half for me. So n plus 1 will be equal to half plus 1, which is equal to half plus 1 is 3/2. Okay. So I know what is n. I have found n plus 1. So this will be equal to x raised to half plus 1 upon half plus 1 plus c, which is equal to x raised to 3/2 upon 3/2. अब सबसे important बात है flipping. Okay. Any fraction in the denominator you need to flip. Okay. Fraction in denominator. अगर लाइन के नीचे कोई फ्रैक्शन आता है तो उसको आपको फ्लिप करना है. फ्लिप करना मैंने उल्टा करना है. अभी ये 3/2 है तो आपको 2/3 लिखना है. सो दिस इज इक्वल टू प्लस सी. ओके. प्लस सी इज ऑलवेज देयर, except for definite integral, everywhere you have plus c. So this will be equal to 2/3 x raised to 3/2 plus c. Yes, Anjali, Kritika, Nancy, Vanya, Anuj. Yes. Vanya, last formula, which formula? A raised to x? A raised to x, integral a raised to x is a raised to x upon log a to the base e plus c. Okay, this we have done the first sum. Okay, वहां पे x स्क्वायर रूट ऑफ x था, अभी क्या है 1/स्क्वायर रूट ऑफ x है. आपको याद ये रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट. कभी कभी बच्चे ना इसमें कंफ्यूज करते हैं. इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x. ओके. इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, अच्छे से नहीं आया x, 1/x dx is log x. But integral of 1/square root of x is not equal to log square root of x. That you must remember. Okay. That is not going to give you that kind of answer. ये आपको अच्छे से कहीं पे लिख लीजिए, कर लीजिए, कि वरना क्या हो जाता है, हमें मालूम है 1/x का जो है उसको log x लिखते हैं, तो 1/square root of x है तो उसको भी लिख देंगे. नहीं. ये नहीं है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है. So let us see. That is why I have, again, wherever the question is there, I have given you the formula that we have to use. So what is square root of x? Square root of x is x raised to half. What is 1/a raised to m? It is equal to a raised to minus m. That I know from indices. So therefore, integral of 1/square root of x dx is equal to integral of 1/a
x raised to half dx, which is equal to integral of x raised to minus half dx. यहाँ आने के बाद हम लिखेंगे, okay, once I'm here, I'm going to write down n is equal to minus half. Okay, n is equal to minus half. N plus 1 will be equal to minus half plus 1. What is minus half plus 1? 1 by 2. Okay, this I have to, ये इनिशियली आप बाजू में कर लीजिए ताकि फिर कहाँ गलती हो रही है पता लगेगा. So integral of this is equal to, now what is the formula? X raised to n plus 1 upon n plus 1. What is n plus 1? Half. So this will be equal to x raised to half upon denominator. It is going to be half plus c. Again here you have to flip. So this is equal to 2x raised to half plus c. ये 1 by 2 है तो वो 2 by 1 हो जाएगा. तो नीचे 2 by 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती. So this is equal to 2 root x plus c. Okay. Yes, Anjali, plus c is important. Sometimes they will what they will give you, they will give you 4 options. In that, in some places the answer will be 2 answers will be correct, but in one they will not write plus c, in another they will write plus c. So in that case you have to mark the one with plus c correctly. Yes. Sania, समझ में आ गया? I hope you've understood. Yes, Vanya, you have to use the first formula. Okay. See, what I'm trying to tell you here is that for the formula for integration of 1 upon x, that is equal to log x plus c, but integration of 1 upon square root of x, x raised to 3 by 2, whatever, that time we will not use the log. You will use the log formula only when there is 1 upon simple x, x raised to 1. Okay, that time we are going to use it. हाँ मोनो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है. Yes, it is the first step formula. Anjali, understood? Very good. Priyanka, yes. है ना, डिनोमिनेटर का हाफ है ना, उसको फ्लिप किया है. फ्लिप किया है मैंने, उल्टा किया है. 1/2 की जगह 2/1 लिखा है, तो वो हाफ हो जाता है. यहाँ पे दिखा है ना, फ्रैक्शन इन द डिनोमिनेटर यू हैव टू फ्लिप. 3/2 क्या हो गया? 2/3 हो गया. Okay. Now let us see the next, e raised to minus 3x. So here you have e raised to ax. हमने इंटीग्रल e raised to x का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज यहाँ पे है, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ सिर्फ x था, लेकिन यहाँ पे क्या है? -3 है. So if there is any number before the x, then we will be using is integral e raised to x dx, e raised to ax upon a plus c. Okay. So this is what is the value of a? A is -3. Okay. So integral e raised to minus 3x dx will be equal to e raised to minus 3x upon -3 plus c. Don't forget the minus sign. So this is equal to minus e raised to minus 3x upon 3 plus c. I think you can now appreciate that if you know the formula, you can solve it very quickly. आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो 10-15 फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के और 10 डिफरेंशिएशन के, तो अगर आप 20-25 फॉर्मूले कर लेंगे तो ये वाला चैप्टर का आप कोई ना कोई जो भी सम आएगा वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे. ओके. सो बहुत बहुत स्कोरिंग है ये वाला चैप्टर, अगर आप मन पे ले ले तो कि मुझे ये चैप्टर करना ही है. मोहित, यू हैव टू लाइक कीप ऑन डूइंग इट. आपको ऐसा नहीं समझना है. आप अभी अभी ज्वाइन हुए हैं ना, तो 10 मिनट में नहीं समझता है. आप ये 2 घंटा आप ये अटेंड कीजिए, उसके बाद आप वापस से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. Yes, Anuj. Yes. Next sum, integral of e raised to x, 3 raised to x dx. Okay, so we are using the formula to x dx. So a is equal to 3. Okay,
So integral of 3 raised to x dx will be equal to 3 raised to x upon log of 3 to the base e plus c. Okay, this is the answer. Yes, very good, Kritika, Vanya, Anuj, Anjali, Mohammad. Yes. Okay. Okay. Next sum, x square root of x. Now here what I'm going to do, I'm going to use a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n from the chapter on indices. अगर आपको नहीं आता है तो आप indices का चैप्टर खोल के वहां पे देख लीजिए. Now x square root of x is equal to, how will I write x? X raised to 1. How will I write square root of x? I will write it as x raised to half. Okay. So what is my m? M is 1. What is my n? N is half. Okay. ये वाला formula हम यहाँ पे लगा रहे हैं. Therefore, x square root of x is equal to x raised to 1 plus half, which is equal to x raised to 3 by 2. Okay. For most of you, you know how to do it, but for those who don't know, I have put it over there. Okay, मोहित, अगर आपको आपने अभी भी ज्वाइन किया है, आपको पहले कई देखे नहीं होंगे वीडियोस, तो ये है, और आप इंडाइसेस का वीडियो भी देख सकते हैं. So this is integral x square root of x dx can be written as integral of x raised to 3 by 2 dx. So n is equal to 3 by 2. N plus 1 will be equal to 3 by 2 plus 1, which is equal to 5 by 2. So integral of x square root of x will be equal to x raised to 5 by 2 upon 5 by 2 plus c. Okay. Which now you have to flip the fraction. So this will be equal to 5 by 2 will become 2 by 5 x raised to 5 by 2 plus c. It can also be given as 2 raised 2 by 5 x raised to 5 square root of x raised to 5 plus c. Okay, so depending on how it is given in the answer. Okay, in the option, जैसे भी आपके ऑप्शन में होगा, ऑप्शन का जो फॉर्मेट होगा, या आपको x raised to 5 by 2 दिखेगा, या इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ x raised to 5 दिखेगा. ओके. मोहम्मद has asked a very important question, like मैम पता कैसे चलेगा कि सम हो गया है? जो आपके पास ऑप्शंस दिखेंगे ना, वहां पे आप वहां तक पहुंच जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अब इस सम में कैसे यहाँ पे आ गए हम, इसमें और कुछ करना ही नहीं है. ठीक है. सो यू हैव टू जस्ट सी व्हाट योर ऑप्शंस आर. So once you see the sum, read the options and then try to solve it. Okay. Yes, Avni, Nancy, Anjali, Priyanka, very nice. Anuj. Now here, what is the sum saying? X plus 1 upon x whole square. Okay. What is the formula we will be using here is, we will be expanding using a plus b whole square. Everybody remembers this from class 10?
This is equal to a square plus 2ab plus b square. Okay, we will be doing this. Okay. So what will be the expansion? This is equal to x square plus 2 into x into 1 by x plus 1 by x whole square. This is equal to x square. Now this x and this x will get cancelled. So plus 2 plus 1 upon x square. Okay. So my function inside the integration sign is now equal to this. So this is equal to my integration is equal to integral of x square plus 2 plus 1 upon x square dx. Okay. So this is equal to integral of x square dx plus integral of 2dx plus integral of 1 upon x square dx. Now you know the formula integral of x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. So this is equal to x cube upon 3 plus 2x, because this is what 2 into integral of dx to x. And plus this is x raised to minus 2. 1 upon x square is equal to x raised to minus 2. So this will be plus x raised to minus 1 upon minus 1 plus c. So my answer will be this is equal to x cube upon 3 plus 2x, and this will be minus x minus 1 upon x. Now this is x raised to minus 1, so this will be minus 1 upon x plus c. ठीक है. अगर थोड़ा सा लगे कि नहीं समझा, कोई बात नहीं, आप इसके बाद थोड़ी देर बाद वापस ये वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, और वहां पे आपको समझ में भी आ जाएगा. ठीक है, अभी एक दो बार आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में. ओके. So here what we have done, so revise, I will just revise the steps. First used a plus b whole square formula, okay, for x plus 1 by x whole square. Okay, I have done this. Then found, this is my first step. Second step, found integration. Okay, what did I do? I've used the formula integral x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1. Okay. Now, next sum. See, this sum you can also use the formula integral of uv dx, okay, which we will be doing later on. But as far as possible, solving it simply, okay, just expanding the bracket and using the simple formula integral of x raised to n is x raised to n plus 1 upon n plus 1 is more useful, okay. There is lesser chance of you making mistake there. Yes, Avni, Anuj. Okay, Anuj is saying, मैम इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बट स्टेप वाइज करता गया तो मैम हो गया. थैंक्स टू यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे से समझा दिया. थैंक यू सो मच. आई होप एवरीबडी विल इज आल्सो डूइंग द सेम. मैं वही बोल रही हूँ, आपको शुरू में ना, आप कोई भी स्टेप, कोई भी आपको बोलेगा ना इंटीग्रेशन में शॉर्टकट है, वो है, आप बाद में करो, पहले आप समझ लो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब लगाना है. जैसे मोहम्मद ने बोला कि खत्म कब हुआ कैसे पता लगेगा, तो आपको ऑप्शंस भी देखते रहने हैं कहीं, और आपको ये भी देखना है कि आपकी माइनस प्लस साइन ठीक से आ रही है कि नहीं.
So those are very important things in integration, where you are looking at the sums and initially doing it very systematically, step by step, writing down the formula that you're going to use. And then you have to pay attention to whether or not you've taken all the signs properly, minus into minus plus, especially when there is a minus sign going into the denominator. Then you have to be extra careful. Okay. नो अंजलि, दो का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, दो का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ टू इज जीरो. ओके, क्योंकि टू इज अ कांस्टेंट. क्योंकि डी बाई डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है. अब आपका कांस्टेंट कभी चेंज होता है क्या? नहीं. कांस्टेंट का मतलब ही वो होता है ना कि जो चेंज नहीं होता, इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है. लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटीग्रल वन डी एक्स. टू इंटू वन कहते हैं ना, टू को कैसे लिखते हैं. और इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स का मैंने फॉर्मूला बताया है ना आपको. इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स इज टू, इज एक्स. सो दिस इज इक्वल टू टू एक्स. कोई सा भी नंबर हो, 5 हो, 7 हो, 1/2 हो, तो भी आपको वही आएगा. ठीक है, वहां पे इंटीग्रल वन डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है. ठीक है. Okay, now let us expand this. So for this, first step will be write, okay, write root x as x raised to half and use a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. ये आपको दोनों चीजें यूज करनी है. ठीक है. So this will be, first I'll just write, solve this and then put the integration. Root x into x cube plus 2x minus 3 can be written as x raised to half. Root x can be written as 1 half into x cube plus 2x minus 3. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x raised to half into x raised to 3 plus 2 into x raised to half into x minus 3x raised to half. ठीक है, हमने ये ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दिया. अभी हमने ये a raised to m into a raised to n वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. तो दिस विल बी 1 half plus 3 विल बी 7/2. ओके, 3 plus half 3.5 होता है ना, प्लस 2x raised to 3/2. आपको अगर फ्रैक्शन नहीं पसंद है तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है ऑप्शन में आंसर डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है. माइनस 3x रेज टू हाफ. ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है उसको हमने क्या लिख दिया, अब ये आ गया, उसको सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया. ओके, सो नाउ माय सम बिकम्स देयरफॉर इंटीग्रल x स्क्वायर रूट ऑफ x cube plus 2x minus 3 dx is now equal to integral of x raised to 7/2 plus 2x raised to 3/2 minus 3x raised to half, the whole thing dx. तो इंडिविजुअली आपको अभी ये करना है. यस, वन्या हैज गॉट इट, दिव्या हैज गॉट इट, अवनी, अनुज. This is what x raised to 9/2, because I'm using this n plus 1 upon n plus 1 upon 9/2 plus 2x by 5/2 upon 5/2 minus 3x raised to 3/2 upon 3/2 plus c. Okay. Okay. Now flip all all fractions in the denominator. Okay. So what will happen? This will be equal to 2 by 9. 9/2 will become 2 by 9, x raised to 9/2 plus 2 by 5 into 2, x raised to 5/2 minus 2 by 3 into 3 into 3, x raised to 3/2
plus c. This is equal to 2 by 9 x raised to 9 by 2. 2 into 2 will become 4 plus 4 by 5 x raised to 5 by 2. 2 into 3 upon 3, this 3 will get cancelled, minus 2 x raised to 3 by 2 plus c. ओके, या तो आंसर इस फॉर्मेट में होगा या 2 by 9 स्क्वायर रूट ऑफ x raised to 9 plus 4 by 5 square root of x raised to 5 minus 2 square root of x cube plus c. Okay. Yes, excellent, Anjali Vanya. Okay. One more thing, एक्सपोनेंशियल वाले सम आप छोड़िए मत. ऐसे जो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला बहुत इजी है, आपको सिर्फ साइंस की ओर ध्यान देना. Anuj saying crystal clear. Yes. So here integral of e raised to 3x plus integral of e raised to minus 4x dx. Okay. Now here, for this, what is the value of a? A is equal to 3. What is the value of a here? A is equal to minus 4. So what is happening in the denominator? You have to be careful. So this is equal to, okay, integral of e raised to 3x plus e raised to minus 4x dx can be written as e raised to 3x dx plus integral of e raised to minus 4x dx. This is equal to e raised to 3x upon 3. And here what will happen? It will be plus e raised to minus 4x upon minus 4 plus 3. अब ये माइनस साइन आ गई ना नीचे, तो उसको लिखेंगे e raised to 3x upon 3 माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस e raised to minus 4x upon 4 plus c. Okay, is that clear? Next. Yes, Kritika. Very good, very good. Okay. Now, for these type of sums, x square upon x plus 1. अब क्या हो गया, पहले अभी तक हमने जो सम्स किए थे उसमें सिर्फ न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में एक जगह ही x था. अभी ये क्या हो गया, ये फंक्शन ऐसा है कि ऊपर भी आपका x है और नीचे भी आपके x में फंक्शन है. तो इसमें अगर न्यूमरेटर में जो x का पावर है वो ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो हम एक्चुअल डिवीजन करेंगे. ठीक है, आई रिपीट, इफ the power of x in the numerator is more than that of the denominator, we will do the actual division. Okay, we are going to do the actual division. Here, what is the power, maximum power of x in the numerator? Maximum power of x in numerator is 2. Maximum power of x in denominator is 1. है ना, डिनोमिनेटर x raised to 1 है ना, x raised to कुछ नहीं है, माने 1 हुआ. So I using actual division. हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर में ज्यादा पावर है x की, तो ठीक है. तो यहाँ पे मैं बाजू में करती हूँ, दिस इज x plus 1 x square. अब यहाँ x स्क्वायर लाने के लिए x इंटू क्या लेना पड़ेगा, x इंटू x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर, x इंटू 1 क्या हुआ, प्लस x. नाउ आई सब्ट्रैक्ट x स्क्वायर और this plus x square and this minus x square will cancel. So this will be 0 and this becomes minus.
So this will be minus x. Okay. Now x and minus x. X into what will give me minus x? So x into minus 1. Minus 1 into x, minus x. Minus 1 into plus 1, minus 1. Okay. So this I again subtract. So minus, this becomes plus, this becomes plus. So what is equal to 0 plus 1? So now are there any more terms in x? No. So that means I have come to my answer. So I will have x square upon x plus 1 is equal to, आपको मालूम है ना जब हम फ्रैक्शन डिवीजन करते हैं, फ्रैक्शन डिवीजन तो होता है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. ओके, फ्रैक्शन डिवीजन क्या होता है? क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. सो दिस विल बी इक्वल टू, व्हाट इज द क्वोशंट? क्वोशंट माने ये, इसको क्वोशंट बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइजर, और इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं. ये सब स्कूल में किया रहा है हमने. So this will be equal to x plus 1, sorry, x minus 1. X minus 1 जो पूरा है ना उसको क्वोशंट बोलते हैं. Okay. So this will be x plus 1, x minus 1 plus 1 upon x plus 1. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. So my integral x square upon x plus 1 dx is equal to now integral of x minus 1 plus 1 upon x plus 1, this whole thing into dx. So this is equal to integral x dx minus integral 1 dx plus integral 1 upon x plus 1 dx. Okay. What is the power of x in the denominator? It is 1. So for this, which formula I am going to use? For this, I am going to use x raised to n, x raised to n plus 1 upon n plus 1. For this, x plus 1 upon x plus 1, the power of x is 1. So here, I am going to use d upon x is equal to log x plus c. Okay. So this will be integral of x dx is x raised to 2 upon 2 minus integral of 1 dx is 1 x plus this will be log of x plus 1 plus c. Okay, clear? There is this clear. I hope it is clear. Okay, next sum. Yes, Akash, Shreya.
Anil, Vaishnavi, Divya. Now you can hear me? Okay. Now it is all right. Okay, yes. I'll do that. I'll teach you first. Okay. See, here what is happening is when the power of x in the numerator is more than the power of x in the denominator, maximum power, here it is 2, maximum here it is 1. What you have to do is you have to divide. You can do it by actual division. Okay. And this actual division I have done and I have got this. Okay. Now, x square upon x plus 1, I have got this as x minus 1 plus 1 upon x plus 1. Okay. Using that when I have a division, it is quotient plus remainder upon divisor. Okay. Then what I have done is this will be equal to integral of x minus 1 plus 1 upon x plus 1 dx. Okay. This I am going to write as integration of the individual terms. This is x dx minus integral of 1 dx plus integral of 1 upon x plus 1 dx. So x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर अपॉन 2, 1 का हमें मालूम है x होता है प्लस यहाँ पे हमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ x की पावर कितनी है 1 है। यहाँ x की पावर 1 है तो ही डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है तो ही हम log वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। ओके ओके वन्या, अंडरस्टूड? Akash, now you can hear Sanya? Okay. चलिए तो ब्रेक ले लेते हैं and then we'll come back and do more sums like this. Yes. Vinu, can we take a break?
Welcome back, everyone. Okay, let us go to the next sum. Again, let us see. What is the power of x in the numerator? Power of x in numerator is 3, maximum power. Okay, maximum power. Maximum power of x in denominator is 1. This is more than this. Okay, so I will use division. Okay, I will use division. So what do? I use x plus 2. I am dividing what? X cube plus 5x square minus 3. Now x, and this is x cube. So x into x square. X square into x is going to give me x cube. So this is x cube. X square into x is giving me x cube, and x square into 2 is giving me plus 2x square. So plus 2x square. Okay. So sign changes. This is minus. This is minus. X cube and x cube get cancelled. 5x square minus 2x square is what? It is 3x square. I'm going to bring this down. This is minus 3. Okay, this minus 3, I'm going to bring it down. Okay. Now, next step will be, I have x square. So, x into x is going to give me x square. And I also have a 3. So, what should I multiply with? 3x. Okay, so plus 3x. 3x into x is giving me 3x square. Now 3x into 2 is giving me plus 6x. 3x into 2 is giving me plus 6x. But here I have minus 3. So I will write it here, plus 6x plus 3x square. So what will I have now? This is minus, this is minus. 3x square plus the x square, this will cancel. What will I have? Minus 6x minus 3, because this minus 3 is going to come down. Now x, here also I have x, here also I have x. So what I will multiply with? Minus 6. Minus 6 into x becomes minus 6x. Minus 6 into plus 2 becomes minus 12. Okay, so minus 12. Now I will this becomes minus becomes plus, minus becomes plus. So this will get cancelled. I have plus 12 minus 3. Plus 12 minus 3 is going to give me 9. Okay. Plus 12 minus 3 is going to give me 9. So what is going to happen? X square plus x cube, x cube plus 5x square minus 3 upon x plus 2 is equal to, okay, what is the format? Quotient plus remainder upon divisor. So what is the quotient? X square plus 3x minus 6. Plus what is the remainder? Remainder is 9. So 9 upon, what is the divisor? X plus 2. Okay. तो यहाँ पे ये जो है ये मेरा क्वोशंट है, ये जो है ये मेरा डिवाइजर है, और ये जो है ये मेरा रिमाइंडर है. ओके. So what will be the answer? Integral of x cube plus 5x square minus 3 upon x plus 2 dx. Oh, sorry, not in the denominator. Sorry about that. Dx is equal to इंटीग्रल ऑफ ये वाले नंबर्स को करेंगे एक्स स्क्वेयर dx प्लस 3 इंटीग्रल x dx minus 6 integral 1 dx plus 9
integral 9 upon x plus 2 dx. Denominator, what is the power in the denominator? This is raised to 1, x raised to 1. तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं? हम log वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. Okay, so this is nothing but the normal formula, x raised to 3 upon 3 plus 3 into x square upon 2 minus 6x plus 9 log of x plus 2 plus c. Okay. वन बाय फोर कहाँ से आया अवनी? Nancy is correct. Kritika is correct. Vanya, can you hear me now? Just increase the volume of your mobile or laptop, okay? Yes, Avni, just check where you got the 4 from. Otherwise, it is okay. Yes. Yeah. Now the next is method of substitution. Okay, so we are now going to do with the method of substitution. See, whenever I had say a plus b whole square, I have a formula. A plus b whole cube, I have a formula. And when you have done it, then also like p plus q raised to n, you have a formula, but sometimes you may not remember it. So the easy way out is using the method of substitution. So whenever you have these kind of powers, ये जब ना रेस टू, अभी देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर का पावर कितना है, 3 है. डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, ये रेस टू 3 है ना, तो 2 into 3 6 हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर का पावर जो है अगर न्यूमरेटर से ज्यादा है तो हम डिवीजन मेथड नहीं यूज कर सकते. ओके, न्यूमरेटर का पावर ज्यादा होगा तो ही यूज कर सकते हैं. So whenever I have this type of sums where the expansion is for a greater number, or where the power in the denominator is more than that, power of x in the denominator is more than that in the numerator, I can go in for method of substitution. Yes, Anuj. पहले टाइम ज्यादा लगता था, अब समझ आ गया तो जल्दी जल्दी हो जाता है. पहले इनिशियली आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छे से आंसर आ जाएगा. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, ओके, put 2x plus 3 equal to z. Okay, put 2x plus 3 equal to z. Differentiating on both sides, we get 2 dx plus 0 is equal to dz. 2 dx, 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 is a constant into dx plus 3 derivative of constant is 0 is equal to dz. So dx is equal to dz upon 2. Okay, this is the important part. Once you are like getting used to this, you will have no problem. So integral of 2x plus 3 raised to 7 dx. So wherever we have terms in x, I'm going to replace it with the this one, and whenever I have dx, I'm going to replace it with dz. Okay. सानिया, सॉल्व करके आंसर टिक भी हो गया. हाँ, टिक भी करना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है. Okay, so this is now in terms of z. We are going to write this in terms of z. 2x plus 3 is what? Z. So this will be integral of z raised to 7.
Instead of dx, what am I going to write? Dz upon 2. So this is dz upon 2. Why we are doing it? Because whatever, if I am substituting something for x, I must also substitute for dx because the change is in respect of that. ओके, मतलब अगर हमने इस तरह से सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा dx अब चेंज नहीं होगा, dx इन टर्म्स ऑफ dz चेंज होगा, तो हमें ये देखना है. सो दिस इज, नाउ यू नो विच इज द फॉर्मूला x रेज टू n x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ये हाफ हम पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ z रेज टू 7 dz, अगेन सिंपल, दिस इज इक्वल टू 1/2 into z raised to 8 upon 8 plus c. Most important step comes now, okay, is that resubstitute. Resubstitute for z. Z is equal to 2x plus 3. ये स्टेप भूल जाते हैं कभी कभी और हम वहीं पे हमको मुश्किल आ जाती है. सो इंटीग्रल ऑफ 2x plus 3 raised to 7 dx is equal to 1/2. Instead of z, what am I going to write? This 2x plus 3 raised to 8 upon 8 plus c. Denominator there is 2 and 8, so this will be equal to 1 upon 16 2x plus 3 raised to 8 plus c. Yes. Yes, some of you have used t. That is also good enough. Okay, you can put it as t. आई होप समझ में आ गया है. समझ में आ गया है तो तुरंत चैट बॉक्स में डालिए आपको समझा है, नहीं समझा है, क्या हुआ है. ठीक है. नाउ लेट अस गो टू द अंडरस्टूड. ओके, सानिया रिपीट करते हैं, हम नए नए सम में भी वैसे ही करेंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज द, यस अनुज, क्रिस्टल क्लियर, प्रियंका इज अंडरस्टूड, मोहित इज अंडरस्टूड, वेरी नाइस मोहित, यू सी यू कॉट अप. आपको देखिए आराम से समझ में आ गया. हाँ, 10-15 मिनट में आपको डरना नहीं है, आपको क्लास अच्छे से अटेंड करनी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. See, when you have such sums where it is raised to a lot of power or you are not able to make the division, so what we will be doing here is where we will be using substitution, method of substitution. Means whatever function is given in x, we are going to express it in terms of z, so to make it simpler. क्यों करना है? कि हमें simple sum चाहिए, इसलिए करना है. Okay, so we have done this. Then once you have substituting for x, you have to also substitute for dx. ये आपको याद रखना, अगर आप x को किसी चीज में सब्स्टिट्यूट करें, आप उसको t लीजिए, y लीजिए, z लीजिए, जो अल्फाबेट आपको पसंद है उससे लीजिए, लेकिन जब आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपको dx भी सब्स्टिट्यूट करना है, ये भूलना नहीं है आपको. सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड फॉर 2x plus 3 and I have also substituted for dx and in terms of dz, and so I have got the answer. Let us try another sum तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. Here why I am using it, because power of x in numerator is less than that in the denominator. Okay, so when that is the case, I am using the method of substitution. So let x square plus 1 be equal to z. Okay, let x square plus 1 be equal to z. Then differentiating on both sides, we get x square differentiation is 2x dx. Differentiation of 1 is 0 and this becomes dz. Okay. Now there is a very important step here, is because see what I have done, x raised to 2.
सब्स्टिट्यूशन क्या है, पावर ऑफ 2 का है, और यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 का पावर है। तो अगर मैं उसको सब्स्टिट्यूट करने जाऊंगी तो मुझे दिक्कत आएगी। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, कितने स्टार्स निकालो कि आपके ध्यान में आ जाएगा, कि एक्स क्यूब को हमने कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है ना वहां पे, इसलिए हमें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो what I have is integral of x cube dx upon x square plus 1 whole cube can be written as integral of x square into x dx upon x square plus 1 whole cube. आप बोलेंगे ये आपको कैसे पता चला? बहुत सारे सम्स करने के बाद ये ध्यान में आता है। ठीक है, आप सम्स करते रहिए। तो now here what is happening, 2x dx is equal to dz. How much is x dx? This is equal to dz upon 2. यहाँ भी आपको दिख रहा है, आपके पास x dx है, तो x dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dz अपॉन 2। और x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 इज z, तो x स्क्वायर कितना हुआ, x स्क्वायर इज z माइनस 1। एक्सक्यूज मी, x स्क्वायर इज z माइनस 1। तो आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है। This is very important and this is very important. Okay. These two I'm going to substitute over here. So this becomes equal to integral. Instead of x square, I'm going to write z minus 1. Okay. Into x dx, what I'm going to write, dz upon 2. dz upon 2. And in the denominator, what am I going to write? X square plus 1 whole cube. X square plus 1 is z. So this will be z cube. So this becomes 1 by 2 integral of z minus 1 upon z cube dz. Okay. Which is equal to 1 by 2 integral of z upon z cube minus dz minus integral of 1 upon z cube dz. Okay. Minus 1 upon z cube dz. So this is 1/2 z अपॉन z क्यूब कितना हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन z स्क्वायर हो गया dz, dz अपॉन z स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन z क्यूब dz। तो 1 अपॉन z क्यूब को कैसे लिख सकते हैं हम, z रेज टू, I can write this as z raised to minus 3 dz. Okay. So this is equal to 1/2 integral of 1 upon z square is z raised to minus 2 plus 1. So this becomes minus 1 upon minus 1 minus 1/2 z raised to minus 2 upon minus 2 plus c. Now, what will I get here? This is minus 1 into 1/2. This is equal to minus 1 minus 1 by 2. Z raised to minus 1, I will write it as 1 upon z. Minus into minus becomes plus. So this is 1, 2 into 2 becomes 4, 1 upon 4. Z raised to minus 2 means what? 1 upon z square plus c. Line थोड़ी टेढ़ी आ गई. So this is 1 upon z square plus c. So this is minus 1 upon 2. Resubstitute z to be equal to, कितना लिया था हमने z? Z was x square plus 1.
x square plus 1. So this is x square plus 1 plus 1 upon 4 x square plus 1 whole square plus c. आपको आंसर इस तरह दिखेगा या प्लस वाला नंबर पहले दिख जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 x square plus 1 whole square minus 1/2 x square plus 1 plus c. Yes, Anjali, understood now? Yes, Anjali, Kritika, Anuj has got it. Kritika has got it. Yes, very good, Kritika. You did it very fast. Very nice. Method of partial fraction, okay? Priyanka, if we get time, I will come back to this sum, okay? What I would want you to do is try to do it again, okay? Try to watch the video again. Try to solve it on your own. And then wherever you get stuck, you go back to the video, watch it again. And always remember to press the like button so that you can get more and more notifications on these videos also, okay? आपको क्या करना है कि अभी एकदम से नहीं समझा है, कोई बात नहीं, आपने एक बार समझ लिया, थोड़ा सा समझा है, तो आप वो खुद से प्रैक्टिस कीजिए और जहां पे भी आपको अटकता है वहां पे आप वापस वीडियो ऑन कीजिए, देखिए वहां पे कौन से स्टेप पे आप अटके हैं, तो वहां आपको वापस से दिख जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और अभी भी अगर टाइम रहा लास्ट में तो मैं करूंगी मेथड ऑफ partial fraction, okay? What does this mean here is, say again here, numerator power of x in numerator is less than that in the denominator. यहाँ तो x x x दिख रहा है, लेकिन आपको देखना है कि यहाँ 2x का मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर कितना आ जाता है, x स्क्वायर हो जाता है। और जब दो फ्रैक्शंस ऐसे दो फंक्शंस ऐसे अलग से दिए रहेंगे, तो देयर इज अ सिंपलर मेथड टू डू दैट. सो वी put 3x plus 2 upon x minus 3, x minus 2 into x minus 3 as equal to a upon x minus 2 plus b upon x minus 3. ओके, इस तरह से हमें उसको लिखना है, ओके. Now I will keep the left hand side as it is. Right hand side I'm going to cross multiply. Okay, so this I'm going to multiply with this. Let me take another color. Okay, I'll take the LCM and then I'm going to multiply. So this is equal to, in the denominator, I'm only talking about the RHS. What do I have? This is x minus 2 into x minus 3. In the numerator, a into x minus 3 plus b into x minus 2. How much will I get? Denominator x minus 2 and x minus 3. A into x, ax. A into minus 3, minus 3a. B into x, bx. B into minus 2, minus 2b. ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम सब एक x के टर्म्स एक साथ लिखेंगे और बाकी नंबर्स अलग से लिखेंगे. सो दिस इज ax और दूसरा क्या है, bx. ax प्लस bx माइनस 3a minus 2b upon x minus 2 into x minus 3. I will take x common. So this is a plus b into x minus 3a minus 2b upon x minus 2 into x minus 3. Okay. So therefore integration of
3x plus 2 upon x minus 2 into x minus 3. Let us just write this first. ये जो फ्रैक्शन है, ये जो फंक्शन है, वो कैसे लिख सकते हैं हम? a plus b into x minus 3a minus 2b upon x minus 2 into x minus 3. Denominator is same, okay? Denominator is same. We match the numerator, okay? So 3x plus 2 is equal to a plus b into x, okay? Minus 3a minus 2b. x के कौन से टर्म है जो रेड में है? Terms in x are in red and other terms are in black. ठीक है? 3x और x plus a plus b into x वो सेम है. So equating we get क्या मिल रहा है हमको? a plus b is equal to 3 क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है? x का a plus b. इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है. So a plus b is 3 and minus 3a minus 2b is equal to plus 2. ये जो ब्लैक वाले नंबर्स है वो वाले ऐसे लिखे. So what have we got? We have got two equations which you have to solve. See, what I'm doing is I'm trying to tell you this. Why? Because it is there in the syllabus, but make sure that you will get simpler sums. Okay. So just stick to the basic 10-15 formulae that you have, that you can be able to do it. Okay. This is something that will help you even in your school and college also. Okay. So this is equation 1 and then this is equation 2. Multiplying equation 1 by minus 3, we get minus 3a minus 3b is equal to minus 9. Minus 3a minus 2b is equal to 2. So I change the sign. So subtracting, this becomes plus, this becomes plus, this becomes minus. So what do I have? This plus, minus 3a plus 3a gets cancelled. Minus 3b plus a, so minus b, and minus 2 minus 9 is minus 11, which implies b is equal to 8. 11, sorry, not 8. b is equal to 11. Minus and minus, it becomes equal to 11. Now I have a plus b equal to 3. So a will be equal to 3 minus b. b कितना? 11. 3 minus 11, तो क्या हो गया? This is equal to minus 8. So a is equal to minus 8. So a is equal to minus 8. ये मेरे पास आ गया solution. A और b का. Okay. So what will my equation become? This equation will now become, this integration will now become integral of 3x plus 2 upon x minus 2 into x minus 3 dx is equal to integral of, see here, a upon x minus 2 plus b upon x minus 3. That I'm going to write. A is how much? Minus 8. Minus 8 upon x minus 2 dx plus integral of 11 upon x minus 3 dx. So this is equal to how much? Minus 8. 1 upon x minus 2. Power of x in the denominator is 1. So this is nothing but log of x minus 2 plus 11
log ऑफ x माइनस 3 प्लस c। देखिए आंसर कितना आराम से आ जाता है, आपको सिर्फ डरना नहीं है, क्योंकि एक बार आपके डिनोमिनेटर में दो फंक्शंस आ गए। देखिए ये डिनोमिनेटर में आपके दोनों फंक्शंस में x का पावर कितना है, 1 है, तो आपको ये मालूम है कि लॉग वाला आंसर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो सिंपल टाइप वाले हैं, इसे उससे कॉम्प्लिकेटेड भी है मैथ्स में, हम वो वाले बात नहीं कर रहे, हम सिंपल वाले बात कर रहे हैं। तो इसमें से आपको देखिए इतना बड़ा हिंट मिल रहा है कि आपको ये लॉग में आंसर आने वाला है। रही बात ये ए और बी की, उसकी वैल्यू सिर्फ आपको निकालनी है, सिंपल अपने साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे किए थे उस टाइप के है। तो वहां से आपको एक बार वैल्यू आ गई तो ये इसमें कुछ है ही नहीं, बचता ही नहीं है। 8 और 11 आपको लाने हैं, बाकी आप आराम से कर लेते। ओके, मैं समझती हूँ कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, लेकिन आप जितनी बार ये वीडियोस देखेंगे ना, आपको धीरे धीरे सब कंफ्यूजन निकल जाएगा। ओके, ओके, वेरी गुड सानिया, ये मेथड समझ में आ गया ना आपको? आपको बस सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप करना है, धीरे धीरे आराम से कीजिए, बिल्कुल हड़बड़ी मत कीजिए। क्या हो जाता है, लिमिटेशन होती है बुक में स्टेप्स लिखने की। ऐसा करते जाएंगे तो जो 1000 पेजेस की बुक है वो 5000 पेजेस की हो जाएगी। तो यहाँ हमने क्या किया है, हमने एक एक चीज लिख के निकाली है। सो विथ दैट व्हाट हैपेंस इज वंस यू हैव रिटन डाउन एवरीथिंग, यू आर प्रैक्टिसिंग इन दैट वे, यू विल गेट द आंसर। नहीं, वही मैं अंजलि आपको बोल रही हूँ, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, और इन केस वो हो जाते हैं ना, तो आपको बस थोड़ा सा देखना है कि उसमें इसका भी बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ देंगे आपको। हम्म, तो आपको डरना नहीं है। क्या हो जाता है, ये बड़े क्वेश्चन देख के हम चैप्टर ऑप्शन में डाल देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। देखिए आप अगर आपके पास लकीली टाइम है तो आप ये भी कर सकते हैं। कभी कभी बड़े क्वेश्चंस तब देते हैं जब बाकी के क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, तो आपके पास टाइम निकल आता है ये नंबर्स निकालने के लिए। ठीक है, these are the other formulae, they may directly ask you the formula also. It is very this thing that once you know these formulas. So what is the formula? Integral of 1 upon x square minus a square is equal to 1 upon twice a log of x minus a upon x plus a plus c. For example, you may have dx, integral of dx of x square minus 9. Okay, you may have something like this. Then this is equal to, what is this? यहाँ पे आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, a is equal to a square is equal to 9। ये a square है, ये जो कुछ भी नंबर है ना, ये आपका a square है, a नहीं है। Therefore a is equal to square root of 9 which is equal to 3। ये बस आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ ए स्क्वायर कितना हो गया, 5 हो गया, तो ए कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, it is not necessary that every time you get a perfect square, you may get square root of 5 also, and that is okay. Okay, a is equal to square root of 9. So what will this be? This will be 1 upon twice a, 2 into 3 log of x minus 3 upon x plus 3 plus c. So this is how much? This is equal to 1 upon 6 log of x minus 3 upon x plus 3 plus c. Okay. Now similarly, you may have a square minus x square. कैसा वाला सम आएगा इसमें? This can be of the form 1 upon 16 minus x square. Okay. Or it may be dx upon 7 minus x square। इस टाइप का आएगा तो ये वाला यूज करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला से, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx is equal to 1 upon twice a log of a plus x upon a minus x।
So can you appreciate here 1/2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, log यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ क्या किया है x माइनस ए, यहाँ क्या था x माइनस ए, वो आ गया। यहाँ क्या है a माइनस एक्स है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, ये प्लस ऊपर आता है, माइनस नीचे जाता है। Yes, all questions are objective, but once you start doing the sums, you will get used to them. Okay, speed भी आ जाएगी, आपको पहले समझ लेना है। Same thing, dx upon x square minus a square and a square minus x square. Okay, same, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला वापस से लिखा है। अभी उसको स्क्वायर रूट होगा, like if there is a square root sign here, okay, so the formula changes log of. So if I have integral dx upon square root of x square plus a square, it is nothing but log of x plus square root of x square plus a square, the modulus plus c. Why have we drawn the modulus sign? Because we know we can find log of only positive numbers. So that is why we do this. Okay. So x plus square root of x square plus a square plus c. Okay. And same thing for the minus sign. If it is a minus sign here, if it is x square minus a square, log of x plus a x square माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सिमिलर हैं, तो आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी आ सकते हैं। सिमिलरली स्क्वायर रूट वो 1 था, ये डायरेक्ट वाले हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। Okay, when do we use it? When there is a product. ये वाला मेथड कब यूज करते हैं? When, अरे, when we have multiplication of टू फंक्शंस। ठीक है, जब दो फंक्शंस है मेरे x में और उनका मल्टीप्लिकेशन है और उसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो यूज करना है। तो जो दो फंक्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा मुझे u लेना है, कौन सा v लेना है, वो मुझे डिसाइड करना है। ओके, आई हैव टू सी विच ऑफ दीज फंक्शंस आई कैन टेक एज u एंड विच ऑफ देम आई टेक एज v। देयर इज अ रूल which is called as islet. Okay, of this, I stands for inverse, which is not there in your syllabus. T stands for trigonometry, which is not there in your syllabus. Okay, so you have to choose accordingly. So first you will always have, this is the first one. So this is the log function, this is the algebraic function, and then this is the exponential function. Okay, means what? When you have a choice, आपके पास एक logarithmic function है, एक algebraic function है, तो उसमें से कौन सा u लेंगे? L, जो पहले आएगा LAE. So logarithmic will be before algebraic, algebraic will be before exponential. ठीक है, so what does this mean? This is my first function and this is my second function. So integration of two functions, first function and second function, is given by first function into integration of second function minus integration of differentiation of first function into integration of second function, is दोनों का integration. Okay, इन दोनों का integration. Okay, so what is the UV formula?
it says first function into integration of second function minus integral of differentiation of first function into integration of second function plus c. Okay, so let us try the sums, and from there we can get the answer. Yes, I let Anuj. Yes. Now let us see the first sum. Okay. So one function is x and the other function is e raised to x. Now L, A, E. मेरे पास कौन से है, ये वाला फंक्शन है इस सम में और ये वाला फंक्शन है. कौन सा पहला आएगा? ए. एल्जेब्राइक फंक्शन जो होगा वो मेरा u होगा. सो लेट u be equal to x and v be equal to e raised to x. फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकलेगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा. तो du by dx कितना होगा? d by dx of x कितना होगा? डेरिवेटिव ऑफ x 1 होगा. इंटीग्रल ऑफ v dx कितना होगा? इंटीग्रल ऑफ e raised to x dx. We know what is the integral of e raised to x. It is e raised to x. Okay, it is e raised to x. So we have integral of x e raised to x dx is see first function into integral of second function minus integral of derivative of first function into integral of second function dx. So u is how much? X. X into integral of second function is e raised to x. So e raised to x minus integral of du by dx. Du by dx is how much? 1 into integral of second function e raised to x plus c. This is x e raised to x minus integral of 1 into e raised to x is e raised to x. So this is again e raised to x plus c. Okay, so this is the answer for the question. Have you understood this? Just put it in the chat box whether you've understood this. 13th sum we'll do later. We'll go to the 14th sum. This is a very important sum which is asked quite often. So here also once we do the sum, you will be able to understand. ठीक है? आप chat box में डाल दीजिए आपको समझा है कि नहीं. LAE, logarithmic, algebraic, exponential. Now what is the functions here? एक function है log x, दूसरा function है x. log x क्या है? Logarithmic function है. x क्या है? Algebraic function है. So which will be u? Algebraic, logarithmic will come before algebraic. So u will be equal to log x and v will be equal to x. So integral of u dx will be, oh, not yet. Okay, u will be log x and v will be equal to x. Okay. Now what I have is, so this is my first function and this is my second function. Okay. What is the formula saying? Integral uv dx is equal to u into integral of v dx minus integral of du by dx into integral of v dx into dx. Okay. Now du by dx will be equal to d by dx of log x. I know derivative of log x is 1 upon x. V is equal to x. Integral of v dx is equal to integral of x dx, which is equal to x square upon 2. Okay. Now I will substitute over here. So integral of log x
dx. Oh, it is only log x, not even x. Okay. I have taken the sum, other sum. Okay, sorry. Just a minute. There is one more sum like this. U is log x. Now here what is happening? It is only log x. So there is no direct method to find integral of log x. So we are using this method. This is an important sum. This is written as integral of log x into 1 dx. ठीक है, तो v कितना हुआ 1. Integral of v dx is 1 dx and integral of 1 dx is x. Okay. So integral of log x dx, ये जो सम है यहाँ पे x नहीं था, एक और एक सम है जिसमें log x x dx है. ये वाला सिंपल log x वाला सम है. जो log x का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रल ऑफ log x into 1 dx, तो इसमें log x को हम u बोलेंगे, 1 को हम v बोलेंगे, and then we are going to get, we'll find du by dx and I'm going to find integral v dx. So integral of log x dx is equal to u. What is u? Log x into v dx. What is v? X. Okay, this is x minus integral of du by dx. How much is it? 1 by x. 1 by x. So this is 1 by x into v, integral v dx. Integral v dx is x into x. Again, this is dx plus c. Okay. Now this is equal to x log x. Okay, x log x minus. Now this plus x and this plus this x and x gets cancelled. So I am left with integral 1 dx plus c. So this is equal to x log x minus x plus c, because integral of 1 is x. Integral of 1 is x. So integral of log x dx is equal to x log x minus x plus c. ये है क्या? नहीं, यहाँ इन्होंने k यूज किया है तो हम इसको k कर सकते हैं. कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं. यहाँ पे प्लस है, x log x माइनस x है क्या? इसमें नहीं है. Okay, there is no minus x here, so this is not the answer. Here I have x log x minus x square. This is also not the answer. X log x plus k, this and this, they have given the same answer. This is also not there. So none of these is the answer and this is the answer. Yes, Priyanka understood. Very good. Anjali, let's see. Now we will see. Yes, very good. No, minus sign will be there. This minus sign is there, no? So minus will be there. Now this is a very good example of the application of integration, wherein you have to use the knowledge of integration to solving real life sums, like finding the area under the curve, okay, finding the equation of the curve, okay, all those things we will do. So let us see one of the simplest example. Find the equation of the curve. तो क्या निकालना है? Equation of the curve where slope, last time we know what is slope, dy by dx. Okay, slope is dy by dx at xy is 9x and which passes through the origin. ये बहुत जरूरी है because this is required to find value of c. जो c लिखते हैं ना हम हर बार, उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये आपको एक पॉइंट देंगे जिससे आपको पता, उसको सब्स्टिट्यूट करके वो c की वैल्यू निकालनी. Find the equation of the curve. So what do I have? dy by dx is equal to 9x. दिया है ना, slope at xy is 9x. So dy by dx is 9x. So dy is equal to 9x dx.
So dy is equal to 9x dx. Integrating on both sides, we get integral dy is equal to integral of 9x dx. So what will be the answer? Integral of dy is y. Integral of 9x is 9x square upon 2 plus c. Okay. Now this is the equation of the curve. लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है. This equation, this curve passes through origin. कहाँ से पास होती है? ओरिजिन में से. सो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0. दैट इज x is equal to 0, y is equal to 0. Okay. Substituting, we get 0 is equal to 9 into 0 upon 2 plus c. ये हुआ 0, 9 into 0 0 हो गया, 0 plus c. तो c की वैल्यू कितनी आ गई? c is equal to 0. So equation of curve is y is equal to 9x square upon 2. Okay. देखिए मैंने ये दिखाया आपको कि कैसा दिखेगा एक्चुअल में, कैसा आपको दिख सकता है ये. So this is the practical example where for this curve, when I want to find, like suppose I have performed an experiment. ये कैसा होता है? उल्टा होता है. यहाँ मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से मुझे ये वैल्यूज निकले. अगर मेरा x इतना है, y उतना आएगा. x मैंने अब इनपुट चेंज किया, y इतना आया. तो मुझे ये इक्वेशन, ये कर्व आ गया. लेकिन अब इस कर्व का इक्वेशन क्या है वो मैं इंटीग्रेशन से निकालती हूँ. मेरे पास ये सारे पॉइंट्स है. आई हैव integrated, accumulated them to give me the equation of the curve. Okay. Is that clear? Okay. So when I substitute, I can say, and then we have the concept of maxima, minima, then we can find that also here. Okay. And these are the rules. C into fx, constant into any function is constant outside the integrations, right? Rule for addition subtraction is same. Multiplication rule we have, integral of uv. Okay, that is there. Then this is also something they can ask you in theory. E raised to x fx plus f dash x is equal to e raised to x fx plus c. And f dash x upon fx is equal to log of fx. ये जो दो है ना, ये आपको डायरेक्टली थ्योरी में भी पूछ सकते हैं. Yes, Anuj is saying clear. Priyanka is saying clear. Anjali, yes. Okay. And the last topic for the day is definite integrals. डेफिनेट इंटीग्रल्स मैंने इंटीग्रल का लिमिट दिया रहता है कि दो नंबर्स के बीच में जो है वहां पे हमारा कर्व कैसे बिहेव कर रहा है, वहां पे हमारा इंटीग्रेशन कैसे बिहेव कर रहा है, उसके लिए हम उसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं. सो हियर माय इंटीग्रल गोज फ्रॉम a to b fx dx. Okay. So this, even if I change the variable, it is also a to b ft dt. Okay, so it is not going to matter. This is important again. A to b fx dx is equal to minus b to a. इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं. वो डायरेक्ट आपको सिंपल से थ्योरी क्वेश्चन में आ सकता है. देन a to b कैन बी रिटन एज a to c एंड देन c to b. जैसे हम यहाँ से a से जा रहे हैं b तक, तो बीच में c तक आए, तो अगर हमने यहां से यहां तक इंटीग्रेट किया
उसके बाद यहां से यहां तक इंटीग्रेट किया तो दोनों का जो एडिशन है वो a to b का इंटीग्रेशन हो गया। इसमें सिंपल जो है आप कर सकते। Yes, this is known as the lower limit and this is known as the upper limit. Okay. Yes, Sania. Then also you have, if fx is equal to f of a plus x, then you can write this like this also and this here also. Let me just simply try to solve some sum, because these are the type of sum which are very easy, and which you can do in the limited time that you have and can get good marks. So let us see integral of 0 to 2 x raised to 5 dx. Initially, you don't have to worry about the limits. Just think which formula will you use. X raised to n is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 wala formula use karna hai. So this is equal to what? X raised to 6 upon 6. Limit is 0 to 2. Okay, 0 to 2. Means what? Instead of x, I'm going to substitute. I'm going to substitute upper limit first, 2 raised to 6 upon 6 minus 0 raised to 6 upon 6. 2 raised to 6, I know is 64. 64 upon 6. 0 raised to 6, 0 raised to 6 is 0 and minus 0. Okay. So answer is 64 upon 6, which is equal to 32 upon 3. Okay, yes, very good. Yes, Anu just solved the other one also. Now let us take, this will be the last sum that we take. Now what is happening? This is equal to integral 1 to 2 x square dx minus 5 integral 1 to 2 x dx plus 2 integral 1 to 2 1 dx. So this is equal to how much? X square will be x cube upon 3, 1 to 2, minus 5, x will be x square upon 2, 1 to 2, plus 2, integral of 1 dx is x, 1 to 2. So what will be the answer? अपर लिमिट फर्स्ट, पहले अपर लिमिट डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3, ये इसका हो गया, ठीक है, माइनस, अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट डाल देंगे ताकि हमसे गलती ना हो। यहाँ 2 है ना, तो ये हो गया 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2, ओके, प्लस 2 प्लस प्लस 2 2 माइनस 1, क्योंकि x को 2 डालेंगे, x को 1 डालेंगे, ठीक है। सो हाउ मच इज दिस? दिस इज 8 अपॉन 3, 8 अपॉन 3 माइनस 1 बाय 3, ये एक हो गया, माइनस दिस इज 4 minus 1 upon 2, this is becoming 3 by 2, okay, and last will be 1. बाहर क्या रह गया? 5 है यहाँ पे, इंटू 5 है ना, 5, 5 इंटू 3 by 2 प्लस 2 into 1, okay, 4 minus 1. So this is how much? 8 minus 1 is 7 upon 3. This is equal to minus 15 upon 2 plus 2. डिनोमिनेटर 1, तो डिनोमिनेटर मैंने 6 ले लिया, एलसीएम ऑफ 3 और 2 6 है, तो 2 इंटू 7 14, 2 3 इंटू दिस हो गया माइनस 45
प्लस ये कितना हो गया, 2 6 जा 12, तो कितना हो गया 14 प्लस ये हो गया 26 माइनस 45 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन 6. Okay, I hope you have understood this. Okay, so what we are doing is simple sum. We are going to first find the integration of all the functions that are given. So x square का निकाल लिया, 5x का निकाल लिया और 2 का निकाल लिया. उसके बाद हमने लिमिट्स डाल दी उसमें और हमको ये आंसर आ गया -19/6. Okay, sometimes here we are using this formula and then adding integrals. So on the left hand side you get 2i. Okay, again these are this is one sum, maybe this is the last sum I take. Yeah, let me take this as the last sum. Okay, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रल्स में. इंटीग्रल 0 to a of fx is equal to इंटीग्रल 0 to a of f of a minus x. ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे ऐसे वाले सम्स है ना जिसमें न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम है और डेफिनेट इंटीग्रल्स है तो आप इसमें यूज कर सकते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज लेट I be equal to x square integral x square dx upon x square plus 2 minus x. Okay, put fx to be equal to लिमिट क्या है यहाँ पे 0 to 2 है ना, ये जो है ना ये वाला 2 वो डालेंगे. fx is equal to f of 2 minus x, 2 minus x, sorry. Okay, put fx as 2 minus x, then we get क्या होगा, x की जगह मुझे 2 minus x जानना है. So what will I get? Integral 0 to 2. This is instead of x I can write 2 minus x. So this is 2 minus x whole square. In the denominator, instead of x square, what am I going to write? 2 minus x. So 2 minus x whole square plus यहाँ क्या है 2 minus x है तो यहाँ पे 2 minus, यहाँ आपको केयरफुल रहना है क्योंकि आपका जो है यहाँ माइनस है, यहाँ -2 माइनस x की जगह क्या लिखना है 2 माइनस x, लेकिन बाहर माइनस है ना 2 माइनस x द होल स्क्वायर. ओके, जहां x है वहां मैंने 2 माइनस x लिखा है. सो दिस बिकम्स व्हाट, this becomes integral 0 to 2 minus x whole 2 minus x square dx, यहाँ dx रह गया, अपॉन नीचे क्या है 2 minus x whole square प्लस 2 minus 2, 2 minus 2 ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया x square. Now you know that these two are equal, so adding them, ये वाला फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है. Okay, adding them which are same. Okay, adding 1 and 2 we get लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा i plus i which is equal to 2i और इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x square upon x square plus 2 minus x whole square dx 0 to 2 और इधर क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रल 0 to 2 minus x the whole square dx upon 2 minus x whole square plus x square. डिनोमिनेटर देखिए आप सिर्फ आगे पीछे लिखा है, x square इधर पहले लिखा है दूसरे में x square बाद में लिखा है. That is one and the same thing. So I have 2i is equal to, इन दोनों को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इंटीग्रल 0 to 2 नीचे क्या आएगा x square plus
2 minus x whole square. हाँ, डिनोमिनेटर सेम है. ऊपर क्या है, इधर कितना है एक्स स्क्वेयर और इधर कितना है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर. 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, इनको हम डालेंगे dx. ठीक है. अभी आप अप्रिशिएट कीजिए कि आपका जो यहाँ है, this numerator and this denominator are the same. X square plus 2 minus x whole square, this is also same, so this get cancelled. Okay, so what am I left with? Here is 0 to 2 और 1 dx. ये कैंसिल होता है, मतलब 0 नहीं होता, 1 हो जाता है. What is integral of 1 dx? It is equal to x. 0 to 2. So 2i, इंटीग्रल 2i is 0 to 2. x को वैल्यूज डालेंगे. 2 minus 0 कितना आया 2. So 2i is equal to 2. So integral value is 2 upon 2, which is equal to 1. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. That is integral of, what was the sum? X square. Integral of x square upon x square plus 2 minus x the whole square dx is equal to 1. Okay. So that completes our integration. I hope you liked it. So don't forget to subscribe also to the ICAI YouTube channel, and also just let me know. आप समझ में आ गया ना? Very good, very good. Yes, Anuj, Kritika, Sanya. Yeah, very nice. Okay. So let us thank you all for your patient hearing. Have a great evening ahead. Okay. Meet you next time. Have a wonderful evening. Yes. Vinu ji?